think we are doing it together, right? All right, Yeah, I think live हो गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सारे लोग? और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेटिस्फाइंग सैटरडेज। और देखते हैं कितना सेटिस्फाइंग होता है। कोशिश हमारी होगी कि काफी सेटिस्फाई हो, और अगर आपको सेटिस्फाइंग लगे तो जरूर बताइएगा, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत है, हमें आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो जनाब, ऑन दैट नोट, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर बात करने लगे हैं उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और मुझे तो बोलने भी मुश्किल हो रही है, मेरे ख्याल से हमारे जो गेस्ट हैं उस पर अच्छी रोशनी डालेंगे। इससे रिलेटेड जो हमने फ्लायर में बात लिखी थी वो बड़ी सादा से थी, और वो बात हमने ये लिखी थी कि जनाब ये एक मैजिक है, मिथ है या मिसकंसेप्शन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसके जो मैजिकल पार्ट है वो तो हमें लारिक बताते ही रहेंगे। साथ साथ जो हमारे पास सवालात हैं वो हमने ऑलरेडी कंपाइल किए हुए हैं। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। और मेरे साथ जो आज इसको कंप्लीट करने के लिए और इसमें रोशनी डालने के लिए आए हैं, द वन एंड ओनली, ही हिमसेल्फ इज अ मास्टर प्रैक्टिशनर एंड अ कोच फ्रॉम ABNLP, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग से काफी ताल्लुक रहा, और हमारी दोस्ती भी ट्रेनिंग के दौर में ही रही 2012 में और 11 में मेरे ख्याल से। और उसके साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी रहा जिसमें एक अच्छी खासी एफर्ट रही जिसको मैंने खुद देखा। और मैं मजीद बोर नहीं करना चाहता, एज मैंने पहले भी कहा था कि जनाब मैं बोर करना नहीं चाहता इंट्रोडक्शन से। लारिक हिमसेल्फ, अरसलान लारिक दी अरसलान लारिक इज विद मी टुडे। जनाब लारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। Walaikum Assalam. It's delightful. Yeah, we have been there in the industry for quite some time, and it's always a pleasure meeting you. So usually I don't do any of the live sessions. Usually I'm always fixated with my graduates, and I'm only spending time in training them. But when you called, I said this is something that I don't have to say no to. And particularly the topic that you selected today, that puts me into a limelight, because most people in the fraternity are going to be looking forward, as to what would basically be the stance of neurolinguistic programming. So, maza aayega. I think I'm really excited. Thank you, जनाब, thank you। और बात सिर्फ इतनी सी है कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम बात अच्छे तरीके से करते हैं तो बात सुनने में भी मजा आता है और समझने में मजा आता है। सो ऑन दैट नोट लारिक, क्विकली अगर आप हमें बताते चलें, ये NLP का मैजिक क्या है, ये मंत्र क्या है, NLP क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं एक लफ्ज में डिफाइन करें, इन वन वर्ड, और अगर आप वन वर्ड शॉर्ट लगता है, इन वन सेंटेंस इफ यू कैन डिफाइन द शॉर्टेस्ट, तो क्या आप डिफाइन करेंगे NLP को? In one word, I can do it in one word. Techniques. One word is technique. It's a technique. So it's a basically system basically which is there designed to provide individuals with the techniques for success. So that would be the very very shortest possible definition. But the construction of this word is also really funny. It comes actually from Bandler. So Richard Bandler, who was the creator of NLP, was once driving a car, and somebody asked him, how did you come up with the name NLP? He said, well, I was going, and there was a police guy. He stopped me on the ticketing side, and he was about to give me a ticket. He says, what do you do? And at that point he saw 3 books on his site. So one was on neurology, the second one was on linguistics by John Grinder, and the third book that he had was calculus and programming. So he said, well, I'm I do neuro-linguistic programming. So the police guy felt so enlightened, and he said, okay, fine, I'm gonna waive off this ticketing from you. I think you do something really really useful. So it's basically a combination. We're looking at linguistics, we're looking at the neurology, we're also thinking about it as a program, and that's why I said the one word to basically define NLP would be basically technique. So it's a sequence of techniques that logo ko help karti hai in terms of if they want to become successful. So we're trying to model them in terms of their behaviors of success. So mostly when people ask me, is NLP for people who are depressed, I said, well, it could be for people who are depressed, but largely it's for successful people, because we're actually modeling a lot of successful people. We're seeing what successful person does when they're depressed and how do they come out of it. We're trying to model their techniques, how they're really, doing those behaviors. We're trying to see that person, who's angry, jisko gussa aa raha hai, and hum dekh rahe hain ki how are they so successful? How is it possible that Richard Branson, basically, can own up to 500 different ventures, and even in the shortest most possible time? How is that possible? So we're looking at that ingredients, we're seeing the techniques, and we're replicating them, and we're trying to apply them on other individuals. So I think that ये सबसे आसान इसी तरीके से हम लोग इसको define कर सकते हैं if you strict me to one word. So एक लफ्ज़ जरा ज़्यादा था लेकिन मजा बड़ा आया सुनने में।
Yeah. I like it. अच्छा एक बात बताएं, अगर कोई एनएलपी करना चाहता है बिलफर्ज तो how one can go about it, इसके बारे में कोई कैसे अप्रोच कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, और ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसके कोई चार्जेस वगैरह होते हैं, how does it work, क्या how one can be an NLP और NLP के लेवल्स क्या हैं? Sure. So हम लोग जो basically NLP देखते हैं तो I consider, so when I did my research, of course काफी लोगों की research इसमें could also be very different, but as I've seen it, I've seen 3 institutions to be very, very successful. So I basically मैं जो अपने reviews पेश करता हूँ वो ये होता है कि depending on what is the success ratio of a institution. So the first one is by the creator Richard Bandler, and he's got the NLP Society. It's a great place. They teach pure NLP. Then we have the John Grinder, who was the co-founder of NLP, and he has his own institution in Europe, in Italy. He basically teaches NLP over there, and it's with the NLP Academy. So the name is NLP Academy. And the third institution, which I found really, really interesting, was of Ted James and Adriana James. Dr. Ted James is the basically person who looks after the American Board of Neurolinguistic Programming. And they had the most, success in terms of creating master trainers. So that's where I basically went and I basically learned it from them. NLP के levels, they're very, sequential levels. So पहला आपको NLP practitioner, then we have NLP master practitioner, and then we have train the trainer level, and then there are more advanced levels should anybody want to basically pursue them. So I think that's the sequence. 3 जगहों से कर सकते हैं, अमेरिका से भी कर सकते हैं, वगैरह से भी कर सकते हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से भी कर सकते हैं. हमारे पास जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा, जो हम शो आमतौर पे उर्दू में ही करते हैं, तो वो शायद मेरे पास अभी मैसेजेस आना शुरू हो गए. यार ये प्योरली मेरा फॉल्ट है. मेरी उर्दू जो है इट्स काइंड लाइक अ चतर. मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत टूटी-फूटी उर्दू में जितना भी कर सकूं. चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जितनी बोल सके वही बेहतर होगा. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अरसलान लारिक एंड को, जो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में जानना चाहूँ तो व्हाट्स द वे इफ समबडी वांट्स टू डू इट, अगर इसका छोटा सा एक आंसर दे दें ताकि हम इस पे फिर मजीद आगे बढ़ते हैं. So we basically, if they want to get in touch, we have a social media page on the Facebook, we have Instagram, and people connect through us, and then we have representatives in different regions. So in Karachi, Islamabad, Multan, Lahore, Islamabad. So we've got a cross section of individuals. So they can always go to our Facebook page. वो अगर request देंगे, we'll be more than delighted to help them and navigate them through इसके साथ. Yeah. और वैसे एक सवाल बड़ा important जो मैंने कहा था आमतौर पे होता है. Sure. Best. Yeah. So the financial, charges जो हम लोग इसको basically price it in Pakistan. While I was doing this abroad, so when I was doing this in Thailand and when I was doing this in Bangladesh and other regions, we basically वहाँ पे pricing structures are very different because of the hotel accommodations and everything. So what we did is that we decided in Pakistan हम लोग चाहेंगे कि इसको we put it at a slab where most people can afford it. So we have priced this, I think, somewhere close to $1,200 and $1,200 means Pakistani approximately 3,50,000 rupees. Now in 3,50,000 rupees, what is the sequence? So sequence जो होती है वो ये होती है कि first they go 8 days of training, and then they have 2 days of evaluation. Then there's another 12 to 10 days of training, and then another 3 days of evaluation. So it's a huge, process. It includes practitioner and it includes the master practitioner, which is the completion of what neurolinguistic programming is. And having said that, so this is one of the prices, mechanisms that we're seeing, which is the lowest in the world. So it's good. I mean, it helps people to understand. समझना चाहूँ, I'm sorry, I'm cutting you, लेकिन sure. आपने बताया 8 दिन जो है वो प्रैक्टिशनर बनने में लगेंगे और मास्टर प्रैक्टिशनर बनने में लगेंगे 10 days. तो 18 दिन. Yeah, and then we have 5 days of very individual, which is the evaluation. So हमें online evaluate भी करना होगा कि if the candidates are able to do those techniques as per the standard. Okay. So yeah. इंटरेस्टिंग. चले जी, ये तो आपने बताया और मुझे लगता है कि आई एम श्योर ऑडियंस कैन कनेक्ट इट. अब हम थोड़ा बहुत जरा एक पर्सपेक्टिव ले चुके हैं कि जी एनएलपी और आप किस तरह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट. आपका कैलेंडर बहुत बुक था. आई स्टिल अप्रिशिएट योर टाइम. आपने टाइम निकाला, थैंक यू. एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जनाब ये एनएलपी सुनने से तो लग रहा है कि आपने बताया सक्सेसफुल लोगों के लिए है, जो डिप्रेस है उनके लिए भी है, लेकिन आपने बताया ज्यादातर सक्सेसफुल लोग भी इसको कर सकते हैं. नहीं, ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है. मैं अगर मैसेज तो ये किस मर्ज की दवा है? आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहता हूँ जी मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, ये किस मर्ज की दवा है? Okay, so
इसको आसान तरीकों में अगर हम लोग समझना चाहें तो let's try to understand some misconceptions जो कि इसके ऊपर डिजाइन होती हैं. Now NLP itself is basically what I said is a sequence of techniques, and these techniques अगर आप NLP को associate करना चाहते हैं, so they're basically modeling technology. So it's a technology name that we give to it is modeling, and modeling is like basically something that we have also seen in Islam as well. For example, if they're Muslim individuals, and Muslim individuals are required to follow the Sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So following the Sunnah is kind of like modeling the best strategies that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did, and if you take them and you apply them, they give you the same results. So giving a very small fashion, like for example, the Prophet basically had beard. Now somebody could think like, well, what's the science behind beard? Now instead of going into the science behind beard, but when you apply that, it does produce certain amount of results for certain individuals. So it has its sense of benefits. So NLP similarly is modeling technology, and हम लोग successful लोगों को देख रहे हैं. So we're not saying that we don't look after the people who might be going through challenges and tough time, but the only way to help people who are going through tough time and challenges is to teach them the techniques that the successful people are using, so that they can come out of it much faster. तो बेसिकली कोई भी मसला हो आपके पास, यानी कि मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ और किसी परेशानी में हूँ, या मैं और कामयाब होना चाहता हूँ, तो इस सारी चीजों में एनएलपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी टूल्स 100%. Yeah, and the beauty of it is कि हम लोग जो है, we're not only teaching NLP. So हमारा institution जो है, that's accredited to teach 4 levels of discipline. So हम लोग इसके अंदर coaching methodology को improvise कर रहे हैं. So not only that I've done it from NLP, I'm also an ICF certified coach. So ICF is the largest coaching body to certify coaches. So इसमें ICF based coaching models, we're trying to disclose those as well. We're seeing the ABNLP coaching standards. We're seeing timeline therapy techniques also as a process in this, and then NLP itself and hypnosis. So we're looking at a combination of techniques, and that's why it becomes really, really powerful for individuals. Nice. चलिए, इस पे सवाल एक मेरा बनता है. रसलान, I know you for some time, और माशाल्लाह आपने ट्रेनिंग में इतना काम किया. You did a very good job, और एक बहुत humble level से start किया. एक होता है कि जी डायरेक्टली आप, जैसे आज आप कहते हैं जी मैं NLP का मास्टर प्रैक्टिशनर बन गया हूँ. आपने इसके लिए जनाब 18 दिन की ट्रेनिंग की है, ठीक है जी. उसके बाद आपने एक असेसमेंट पास की है, एक इन्वेस्टमेंट टाइम की है, और आप जनाब आप मास्टर प्रैक्टिशनर बन गए. लेकिन ट्रेनर बनने के लिए आपने इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है ना. मेहनत, अगर मैं आसान लफ्जों में पुट करूँ ना, कि जनाब स्टूडेंट से लेकर के कॉर्पोरेट तक का सफर, कॉर्पोरेट से फिर आपने जनाब ये शिफ्ट किया, तो ये मतलब किस मर्ज की दवा कर रहे हैं? व्हाई लीव ट्रेनिंग? अच्छा खासा काम चल रहा था, मतलब व्हाई एनएलपी देन? यार क्या जरूरत है? मैं अच्छा खासा एक बैंकर हूँ, कल को मैं बोलूं जी मैं म्यूजिशियन बन गया, तो व्हाई? ये मतलब दैट मेक्स यू फील लाइक कि ये चेंज होना चाहिए. मैं इसमें इरफान कोई ऐसा क्लेम नहीं डालूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बचपन से एक वही आई हुई थी. सो इट्स नॉट लाइक दैट. बट इफ मोस्ट ऑफ पीपल जो लोग मुझे शायद में भी जानते हैं, आई स्टार्टेड माय करियर एज सेल्स, एंड सेल्स के अंदर फंडामेंटली जो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, वी आर सीइंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ परसुएशन, हाउ टू बिल्ड रैपोर, हाउ टू बेसिकली डेवलप रिलेशनशिप्स. And from sales, I transited to training based. So I was working for a training organization. Then I also joined the other side of the learning and OD side, and I was working in the enterprise where I was looking after the structures as well. What I really found is that individuals जो आते थे, उनकी कुछ challenges ऐसे होते थे which I couldn't understand really. So for example, when हम लोग जब दफ्तर जाते हैं, and somebody might be going through some challenges at their household level. And the company says, well, we don't care. We want results. At the bottom line, we're very focused on results. Of course, we're a caring company, and we will give you all the provisions like medical facility and everything else. But we want to be also, focused on results. So for this results, I ventured into NLP practitioner, and I didn't even study. It's not like I just went and did NLP practitioner and I became successful with it. I did NLP practitioner 5 times from very, very different individuals. So I did it 5 times. I did, my master practitioner, I did it 5 times. I've been doing my train the trainer for a number of times. So I want to basically go and have my total immersion in terms of understanding the tools of those which actually give results. So I believe in results. You're right. देखिए रिजल्ट वाली बात तो ठीक है लारिक, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ ना, देखिए you are already doing good in training, right? अब आप ऐसी जगह घुस गए हैं जनाब जिसका नाम है NLP, घुस गए गलत लफ्ज़,
खैर बहरहाल जिस काम पे आप लगे हुए हैं वो है एनएलपी, ठीक है ना जी? Yeah. तो उर्दू देखे मैं भी स्ट्रगल करता हूँ ना तो True. अब मेरा कहना सिर्फ ये, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, देखे ना, एनएलपी को लोग बोलते हैं सूडो साइंस है, इसकी कोई Yeah. रियलिटी नहीं है। तो एक ऐसी चीज जिसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी इंडस्ट्री बड़ी रिफाइंड और बहुत ही ज्यादा उसके ड्राइवन रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप वो छोड़ के जनाब लग गए एक ऐसी दुकान पे, जनाब ऐसे काम पे लग गए जिसको लोग चैलेंज भी करते हैं। सो व्हाई गो इनटू इट यार? मतलब आप कह रहे हैं जी मैं लोगों के जाके परेशानियां हल करूं, व्हाई व्हाई बॉदर? उधर ट्रेनिंग कराई Well, सुबह शाम तक, छुट्टी की, अल्लाह हाफिज। yeah. So, yeah, these are two different set of questions. I'm sorry, I'll go. I was just asking you this. I hope my some of my students who are watching this and they'll have maybe एक और better understanding भी हो जाए, and plus also general आवाम के लिए. Pseudoscience, the word that you've used, actually as pseudoscience. So, अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग नया NLP, so I'll give you a story. There was a graduate of ours. She did neuro-linguistic programming, goes back home, and her sister is a psychologist who has spent about 6 years, studying a degree program, how basically, mind works and everything. And she says, "Ab tum mera depression khatam karoge." You would know more than me. So, some people struggle in terms of answering the, right appropriate question. Let's go to first the pseudoscience part. पहली बात तो ये चीज है कि किसी भी चीज को pseudoscience बनने के लिए first ये establish करना होगा कि वो science है. पहली बात तो ये कि NLP जब साइंस ही नहीं है तो वो आप pseudoscience उसको कैसे बोल सकते हैं? लेकिन मैंने तो इसके बारे में पढ़ा है कि जो इसकी ब्रेनिंग टेक, जो मॉडलिंग ऑफ ब्रेन का जो मॉडल यूज करते हैं, दैट्स आल्सो ऑब्सोलीट। तो अगर आप एडवर्ड डिबोनो की बात करते हैं, जनाब उन्होंने लेट 60s में रिसर्च की थी, अब हम कहते हैं जनाब ये जो मॉडल और टेक्निक्स है, आपने जो बात बताई वो तो ये बताया ना कि दिमाग से रिलेटेड है, तो लोग तो ये भी कहते हैं, अगेन ये मेरे अल्फाज नहीं है, व्हाट आई फाउंड इन द रिसर्च, के जनाब लोग ये भी लिखते हैं कि जो इसकी बाकायदा, जो आपने एनएलपी लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसको कंबाइन करके आप कहते हैं इंसानी दिमाग की वो चीजें सीखते हैं, जैसे आपने रिचर्ड ब्रांसन की मिसाल दी कि वो हम उनसे वो सीख रहे हैं, तो भाई वो तो ये कहते हैं कि जो आपका मॉडल है वही ऑब्सोलेट है। Yeah. So, but I think what is more, in terms of understanding over here is कि एक चीज जो होती है, काफी सारे people, those who are teaching NLP, they claim NLP to be a science. What I'm actually saying is that I, as a trainer, have never actually told that NLP is a science. So, पहली बात ये कि अगर कोई चीज scientific होगी तो वो pseudo science के पैरामीटर में जा सकती है, right? एक चीज जो science ही नहीं है, how can you make that a pseudo science? Does that make sense? And when people say कि ये model काम नहीं कर रहा, let me be very blunt in this. What actually they're saying from their innate belief system is कि it does not work for me, and that is okay. हम लोग ये establish कर सकते हैं, इरफान, कि you've been a trainer in the industry for the longest, and for certain people, training does not work. It does work for a large audience, but for some people, it does not work for everyone. That would be a very tall claim. Exactly. So NLP does not help everyone. चलिए, सवाल है, ये स्क्रीन पे अगर आप सवाल ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। What is actually meant by the fourth dimension often associated with NLP? ये क्या चीज? Okay. So what? I don't know. For us, आप कुछ भी बोलिए, मैं कहूँगा ठीक ही होगा। No. Actually, so this will basically open up the second definition of NLP. So NLP जो होती है, we basically, since it's not scientific, what we basically study, we study subjective, areas that are subjective, not objective but subjective. Now, what is subjective? For example, agar मैं कहूँ कि let's assume if there's a building. Now, building is a reality. But nevertheless, if I see that building, I'll see it from my model of the world, and somebody else who will see that building will see it from their model of the world. The concept of dimension comes in linguistics, and in linguistics, there is a quantum linguistic area. Now, in the quantum linguistic area, हम लोग क्या करते हैं कि language को काफी सारे dimensional, perspectives से हम लोग उनको देख रहे होते हैं. Whereas the fourth dimension is something that has been scientifically, studied. So now that's not something that is NLP. But there are over, now 40 dimensions, and there are over about 60 dimensions that scientists are basically looking at. Again, they haven't come to any conclusive experiences because the reality that we see it in 3 dimensions, and fourth dimension. Even if the fourth dimension does appear in our reality, we'll only see a fragment of it in 2D, but not in basically the fourth dimension. I hope that.
Yeah. एक सवाल यहाँ पे ये बनता है, अभी आपने बताया कि जनाब एनएलपी जो है वो सूडो साइंस नहीं है क्योंकि वो साइंस से उसका ताल्लुक ही नहीं है। अभी आप Exactly. साइंस Yeah. की डायमेंशंस यूज कर रहे हैं, तो इज दैट Yeah. कॉन्ट्रोडिक्टरी? मैं समझना चाह रहा हूँ एज ए सेट कि Sure. अब आप Yeah. कहते हैं कि जनाब व्हेन यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, तो वो साइंस है और वो एनएलपी में लिखा हुआ है कि जी वो Yeah. साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो आप फिर कैसे कहते हैं कि ये सूडो साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो साइंटिफिक ही नहीं है? Okay. So वो I can. Yeah. Sure. So let's look at this from a perspective. So when I say basically NLP is a modeling technology, right? So how it was created, if you go into the foundation of it, the world's best therapists were taken up. For example, Milton Erickson and Virginia Satir were the world's most top psychotherapist and hypnotherapist at that time, and Fritz Perl also for that matter. When they looked at therapists, what Bandler and Grinder did is that they modeled them and saw what was actually creating results. And so they modeled the therapeutic, techniques, and they created a version of it of something that basically would, create the same amount of change in the least amount of possible manner of time. Now, when I say it's a technique and it's not a science, and when I'm giving scientific background behind it, is only basically saying that there's a lot of things that science has achieved for us. So in short, I don't study NLP to understand the science behind NLP. I study NLP, and in which I understand the science behind the brain and the mind and how the mind functions. You have to be very clear what techniques are. Have you ever been to mixed martial arts, for example, Irfan? Have you ever? मैं नहीं No. गया, मुझे मेरी हड्डी अभी तक ठीक ठाक है। ये कटिंग यू, लेकिन मैं ना जरा कुछ सवालात हैं जो ना बर्निंग क्वेश्चंस है, जो मुझे बड़े जो ना हिट आ रही है कि जनाब ये इस पे भी जरा आते हैं। अब मेरा सवाल है कि जनाब आपने बताया कि जनाब एक लड़का है, उसने कहा जी, उसकी बहन ने कहा जी मैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, आप एनएलपी कर आ गए हो, है ना जी, तो आप मुझे अब क्या बताओगे? तो इसमें क्या गलत आर्गुमेंट है? आई मीन आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब एक बंदा जिसने 4 साल डिग्री लगा के पढ़ा, दिमाग को पढ़ा, और साथ साथ बिहेवियरल साइंस जो इंसान की होती है ना, कि आपकी सेक्शंस, आपके वर्ड्स से उस कंक्लूजन पे जाना, ये सारी चीजें करता है वो, और वो लड़की ने 4 साल लगाया, फिर उसके बाद उसने एक प्रैक्टिस की। बेस्ट पार्ट ये रही कि उसने एक इंस्टीट्यूशन में जाके ये काम किया, नॉट इंडिविजुअली। वो एक इंस्टीट्यूशन में गई, उस सारा वक्त वहां जाके उसने पढ़ा, उसकी साइंसेस को समझा, बिहेवियर्स को समझा, एंड देन शी as this boy who did it like maybe उसने हो सकता है 8 दिन का कोर्स किया, he is an NLP practitioner, अब वो आके उसको बोलता है कि जी तुम्हारा और मेरा काम जो है ना बराबर हो गया, तो ये कैसे हो सकता है? Do you agree with that? ऐसा हो सकता है? Let me link it up. Let's put this into context. And the reason why I said about mixed martial arts is that you have 3 different techniques. Let's assume. So you've got mixed martial arts, you've got jiu-jitsu, you have karate, for example. Now, when you learn one technique, would that be enough for an individual or somebody who basically knows 3 variations of techniques? Now, that's the challenge over here. Now, if you really want to ask me about psychiatrists, I have trained psychiatrists. I have also done training for NLP for psychiatrists and for psychologists. And they've been more than happy basically using that technology, and it has provided results for them in terms of management. What we really want to see is even Stanford University, I was trying to check their curriculum. Stanford University makes it compulsory to have complementary therapy or alternative therapy as their subject areas. So NLP is actually taught in Stanford University psychology as a subject area. So and irrespectively, if a psychiatrist knows one more domain of complementary therapy or an alternative therapy, it makes them even much more bulletproof. That's what we're looking at. So even as just me doing NLP, I've not stopped at NLP. I basically gone further and taken my own more credentials in terms of trauma care therapy. I've also done dialectical behavioral therapy. I've also done CBT. So you keep on expanding. Like I said, NLP is not sufficiently enough for everything. Psychology and psychiatry does not cater to every single area in the world, but they do cater to a specific area. And having a multitude of different disciplines really, really helps. I hope that answers that question. Yeah. अच्छा, एक हमारे पास कमेंट आया हुआ है और सवाल ये है कि जी ये कहना चाह रहे हैं कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातें थियोरेटिकल हैं, अनक्लियर हैं, अगर इट्स मोर लाइक हाउ डू यू इवन रीड hypothesis and does not help everyone, so what does it do? अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि देखिए ना, हम लोगों की बात करते हैं। अभी आपने जैसे बताया कि जी वो आपने अपनी सर्टिफिकेशंस भी की, आगे भी बढ़ते रहे, ठीक है ना जी, बढ़। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई वो बच्चा आके अपनी बहन को कहता है
कि या वो लड़के को जाके बोलता है कि जी तुमने जो 4 साल पढ़ा है वो तो मैं बराबर हूँ, आपको मुझे क्या आपको लगता है 8 दिन में इंसानी दिमाग के जैसा और सक्सेसफुल लोगों की तरह आप उसको बता सकते हैं, 8 दिन में कोई इतना सीख सकता है? इज दिस एक्सेप्टेबल टू एनी ह्यूमन ब्रेन? मेरा सवाल ये ऑडियंस से भी है जो सुन रहे हैं कि डू यू बिलीव कि अगर मैं 8 दिन गाड़ी चलाता हूँ और 18 साल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 0 एक्सीडेंट हिस्ट्री है, आप किस ड्राइवर को बेहतर मानेंगे? So, well, let's create a little bit sense of understanding for Umair. When I say basically it does not work for everyone, what I'm saying in placing that context is for any therapeutic, process in the world does not work for every, individual. People are receptive to different type of interventions for themselves. So for some people, psychology works. For some people, psychotherapy works. For some people, NLP might also work. But again, NLP has no comparison. You cannot really compare two disciplines with one thing. एक मैं simple example देता हूँ. So there was one person who came to me who was very critically, depressed, and did not take any therapy sessions from me, but was actually trying to, explore on his own horizon. He said कि अरसलान मैं एक अपने physiotherapist के पास गया था, and the physiotherapy exercises that they made me do, I felt all my depression went away. Now, how was that happening? So now would somebody else come out and say कि physiotherapy is, better than psychology? You can't make comparisons on those fronts, but it is what helped the client, what basically liberated the client in terms of having more success for themselves. So I hope that puts the context into place. And just second choose, I think what you were asking me in terms of question was that if, is 6 then more than 6 to 8 days, are they more than enough? No, 6 to 8 days are not more than enough, right? It's just like saying you have in martial arts, you've got black belt, white belt, and all other belts. So just because you got a black belt does not mean that you are an amazing person. And if you go on a street fight, you would basically combat anybody. It might not be there. So it requires a locus of experience. So when I basically was going through my NLP practitioner, that's not the only thing I did. I basically worked, hundreds of hours together in terms of seeing the utility. That's basically called walking the walk and talking the talk of what you learn. So no, 6 days are not enough. That way, 6 years also might not be enough, right? Even 8 years are not enough. Does that make sense? Absolutely. और मैं ये कहना चाहूंगा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा सवाल है कि भाई वो 5 दिन करके बच्चा जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकता, पहली बात. It's not enough. It should not, and it's not right to challenge also. And you need to spend a more time, जो कि आपकी असल इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने बताया, आवर ज्यादा लगाने हैं, उसके रेगुलर एक्सरसाइजेस गुजरने हैं, एंड अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए you have to go through the whole process of certification. तो जो लोग NLP करना चाहते हैं, ये याद रखें आसान लफ्जों में कि ये एक 5 दिन की कहानी नहीं है. You need to elevate yourself throughout the process. तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, you will advance yourself. Am I correct on this? ठीक है. अच्छा, उमैर इसी पे कुछ बताना चाह रहे हैं कि जनाब अगर आसान लफ्जों में बता सकें कि जनाब अगर ये सबके लिए नहीं है तो किसके लिए है? आसान लफ्जों में. So that will be a really good. So for example, अगर कोई भी शख्स है and they're struggling in certain areas of life, so what they can do is they could come to an NLP practitioner and understand the necessary tools and techniques to take them from point A to point B, and to be successfully transit towards, achieving their goals and their ambitions that they've set for themselves. That's how I would want to put it. It helps the human being to become 1% better. क्या ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग ऐसा होता है कि जनाब मैंने कहा जी इरफान साहब मैंने ना इस बिल्डिंग को धक्का लगाना है, अरसलान साहब ने कहा मेरी मोटिवेशन सेशन में, इरफान साहब गए, आपने कहा बिल्डिंग को नहीं कश्ती को धक्का लगाऊंगा, तो क्या वो उसमें मतलब मैं समझने चाह रहा हूँ ना कि अगर मेरे लिए काम करता तो मेरी प्रॉब्लम को क्या मतलब ये क्या मोटिवेशनल सेशन है, ये क्या होगा अगर हो? No, as a therapist, or any great therapist in the world would basically allow you to know that we basically facilitate our clients. We help them to use their brain for the first time. So what happens is, अगर कोई मुझे बोल भी देगा, for example, कि मुझे बिल्डिंग को धक्का मारना है, I would ask him, is it possible? Is it achievable? Is this doable? So until they can come to a reality which they can basically do and achieve, and which actually makes sense for them, and that can be worked on. If there's something that cannot be worked on, would not be a possibility even in the domain of therapy or even in the domain of coaching. So we basically help the clients. There are 4 specific areas जिनके आसान लफ्जों में अगर मैं लोगों को समझाना चाहूं तो मोटिवेशनल सेशन नहीं है. Do not confuse yourself. No, like for example, again, I'm going to backtrack to the technique-based, areas. Technique-based areas are people who teach yoga. Yoga is a technique, and martial arts is a technique. So when you're talking about martial arts, I could be sitting there and motivating anybody. You can do it. Go punch him. Go punch him. It's not going to work, right? Unless you give them the tools and techniques, and the technology is transferable.
That's very important and that's very critical. चले इसमें मजीद बढ़ते हैं आगे। इस सवाल पे हमने काफी रोशनी डाली। एक सवाल मेरा ये कि जनाब आज मैं बिलफर्ज बड़ा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लारिक का सेशन मैंने सुना और मैंने कहा यार मैंने एनएलपी करा दी, ठीक है ना, या मैंने एनएलपी कोच से कांटेक्ट करना, आई नीड टू कनेक्ट विद समवन विद एनएलपी एक्सपीरियंस, ओके। एंड अब मुझे जब मैं ढूंढने गया हूँ तो जनाब मैंने देखा एक 19 साल की बच्ची है, उसने लिखा हुआ जी मैं एक मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, और एक 60 साल के बंदे ने भी लिखा है कि जी मैं एक मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि यार ये कैसे हो सकता है, एक 19 साल की बच्ची, एक 60 साल का बंदा, दोनों लिखते हैं मास्टर प्रैक्टिशनर। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पे होगा कि जनाब ये इसका कोई प्री रेक्विजिट होता है? अभी आपने बताया सब तो ठीक है टेक्निक वगैरह, लेकिन अब मैं जनाब आज रेडी लगा रहा हूँ। सुबह मैंने आज सुना लारिक साहब का बयान, मैंने कहा जी सानू भी एनएलपी करा दो। तो ये आपने की बात की थी, साइकेट्रिस्ट एनएलपी करता है, मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि उसको ब्रेन का पता है, लेकिन मैंने सारी जिंदगी मैनेजमेंट पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बायो पढ़ी है, मेरी उम्र 19 साल है, तो उसका प्रीरेक्विजिट क्या है? इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट। Sure. So let's basically, so this is again twofold question, right? So I'll answer the first one. पहली बात तो ये कि चाहे यहाँ पे अवाम जो भी बैठी हुई है, चाहे वो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, you know, one thing that I've learned in my life, Irfan, is to ask this one question. So I always ask the therapist, you know, how many hours of therapy have you taken for yourself? And when was the last therapy that you took for yourself? Please mark my words. There was a very indefinite sense in this. I had a very good friend, and I'm not basically complaining, but I suggested, certain really good models for that person. This was a psychologist who had basically been there as a psychologist for about 20 years. Now that's that's 2 decades of, and I said, how many depressing clients do you, take up, on an average? He said, मैं हर रोज तकरीबन 8-9 लोगों को देख रहा हूँ. Do you remember about that? Do you know that, when you spend, the concept of basically, if you spend 5, if you have 5, if you're spending time with 5 billionaires, you're at least a half millionaire. You're an average of the 5 people that you hang out with. You're sitting with 5 depressed people. And if somebody comes up with an attitude that नहीं मैं अपने लिए therapy नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, I would be shit scared, right? So if there is a master practitioner that you guys find out, one question that you would want to ask them: how much of interventions are they doing it for themselves? Number one, how much are they doing it for themselves? Number two, how many hours of basically studies do they put into in terms of understanding this, and how many hours of successfully coached people do they have? You see, anybody can do NLP. And but based on how much of results are they producing, is there a client coming back to them, is the client referring them, and if the client has a referral base and they are coming to them, there is something good that they're doing. Does that make sense? But make sure it's just like a flight attendant को भी अगर हम लोग बोलेंगे कि flight attendant बोले कि नहीं मैं जहाज उड़ा लूंगा, अब मुझे practice की जरूरत नहीं है. You have to update your modular areas in terms of keeping your practice alive, right? That requires you taking sustainable amount of sessions for yourself. Agreed. लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ना लारिक एक बड़ी स्पेसिफाइड और बड़ी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है. यानी फ्लाइट अटेंडेंट जो है ना वो ड्रेस कोड भी फॉलो करती है, उसका स्कार्फ सर्टेन एंगल पे वो बनता है, अगर नहीं बनेगा शी इज नॉट अलाउड टू गो फॉर दैट. बड़ी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है. यहाँ हम इंसानी दिमाग की बात कर रहे हैं. मेरा सवाल फिर वही है, मैं ढूंढ रहा हूँ बंदा 19 साल का, वो देखता हूँ उधर भी मास्टर प्रैक्टिस में लिखा हुआ है ना जी. हम 29 साल का कर लेते हैं, उसने लिखा जी मैं 19 साल से कर रहा था ये काम. एक ने लिखा जी मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं भी ये काम कर रहा हूँ. तो मैं इसका प्री रेक्विजिट जानना चाह रहा हूँ. भाई देखे ना, ये इंसानी दिमाग का मामला है, ये कोई स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री थोड़ी है कि मेरे दिमाग का ये फॉर्मूला है तो आपका भी यही होगा. हर इंसान अलग है और इंसान की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज उसका दिमाग है. एक इंसान बिल्कुल ठीक होता है, अगले दिन खुदकुशी कर लेता है. एक इंसान बिल्कुल ठीक होता है, अगले दिन जाके किसी को गोली मार देता है. एक इंसान इश्क में किसी की जान ले लेता है, एक इंसान इश्क में अपनी जान दे देता है. वो इश्क किसी से भी हो, रब से हो, इंसान से हो, किसी चीज से हो. तो अब ये इतना सीरियस मामला है कि जान ले लेते हैं लोग, जान दे देते हैं लोग, एक दूसरे का हक मार लेते हैं. अब जनाब मैं जा रहा हूँ कि जी मेरी इस्लाह हो, मेरा दिमाग ठीक हो, मैं एक ऐसी प्रैक्टिस, मैं कैसे पिक करूंगा कि मुझे 19 साल वाले को ढूंढना है या 60 साल वाले के पास जाना है? आपने कहा मैं सवाल करूं. अब अगर मैं उससे सवाल ये करता हूँ, यानी आप ये सोचें आप डॉक्टर के पास गए है ना जी, और डॉक्टर से पूछे आप ये बताएं, आपने कहा 5 लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो उसके ऊपर वो असर होता है. यार जो मेरा पीसीपी है वो तो दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा पेशेंट देखता है, और किसी को नजला होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है. इसका मतलब ये थोड़ी उसे नजला जुकाम खांसी हो जाए. तो मेरा ये सवाल पूछना मुझे नहीं लगता कोई अहमियत देगा उस बात को पिक करने में, स्पेशली जिस बंदे को मैं इतना भरोसा करने जा रहा हूँ कि आप मुझे समझाएंगे, गाइड करेंगे. तो अगर आप इसको जरा सा आसान लफ्जों में समझा सके एक सादा मिसाल से तो बड़ी आसानी होगी. Sure, let's look at it.
So even when I'm saying basically go and ask the person individual, तो उस individual में हम लोग चीज क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि basically are they basically taking sufficient amount of hours for themselves? That's number one. So we're not comparing कि 60 years ज़्यादा होते हैं या 2 years ज़्यादा होते हैं, but we're saying कि they're making a significant change for themselves. And areas जो आपने पूछे हैं, so in terms of only NLP, now although I've done a lot of other credentials which help me to allow me to do more stuff, but for just NLP, we're looking at 4 quadrants. Number one, if there's anybody who's going through a sense of negative thinking, if they're basically designed and they realize that they're under in the form of negative thinking, or they're experiencing a negative emotion, that's number 2. Number 3, if they're experiencing or they've created what we say is limiting belief. So basically things like मैं ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता. And number 4 is inner conflict. If the person is perplexed about whether I should basically choose this or choose that. So these are the 4 sufficient areas where NLP can address and solve areas. So negative thinking, negative emotions, limiting belief, inner conflict, and also to certain extent, certain amount of behavior patterns, which we can also shift, which is like, for example, somebody who's, engaged in negative behavior or in a bad habit or bad, basically habituation. So we want to basically shift their behaviors into more constructive behaviors. So that's the domain. I mean, that's where we would want to operate. But of course, if somebody's going through a neurological, problem, if their brain isn't functioning, to the standard, basically where it's supposed to be, which are defined by the medicines or the field of, they should go to psychiatrists. They should go to psychologists. Let's assort them for disorders. You will basically visit people who are psychologists or psychotherapists or maybe clinical, psychiatrists. But whereas for even normal, if your brain is receptive and it's a normal functioning brain and they're going through certain set of challenges, NLP would be more than easy to in terms of, address those areas. So again, that's the quarter. I hope that's. तो बेसिकली यानी कि हम आप इसको जरा आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा कि जी एज में अगर मुझे पिक करना है, क्योंकि देखे ना एक इंटेलेक्चुअल एज भी होती है ना. मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैंने माइग्रेशंस किए हैं, मैं बाहर रहा हूँ, अकेला रहा हूँ, बेगम बच्चों को लेकर रहा हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है. तो अगर मैं चीजों को समझता हूँ ना तो मेरा पर्सपेक्टिव और होता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक लड़का लड़की सिंगल है और वो एक शादीशुदा औरत के मसले हल करने जा रहे हैं. दे हैव लिटरली नो क्लू. मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ. I don't know what ABNLP, yourself or anybody, with all due respect, that kid can never understand कि मेरे शादीशुदा क्या मसले हैं. नहीं समझ सकते क्योंकि वो रहा ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं गुजरा है. तो मैं ये समझना चाह रहा था कि जो 60 साल का बंदा है, क्या एनएलपी वो डिस्काउंट कर देता है उसकी? पहला ये सवाल, क्या एनएलपी डिस्काउंट करेगा उस एज वाले फैक्टर को समझने के लिए? चले जी, मान ले तो उसने 4 और सर्टिफिकेशन कर ली, 15 सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन आप यकीन करें, इफ अ पर्सन इज नॉट मैरिड, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड अ मैरिड पर्सन's प्रॉब्लम. Period. A person who's not supporting his father, his family members will never understand the problem. On top, क्या ये डिस्काउंट करता है? मुझे अभी सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये डिस्काउंट करता है बेस्ड ऑन द, अगर आप अपने आप को एलिवेट करें, नॉट ऑन द सेम लेवल ऑफ एनएलपी, क्योंकि आपने बार बार ये बात रिपीट की है कि अपने आप को एलिवेट करें, वहां रुकना नहीं है. आपने ये नहीं एनएलपी करके हाथ खोल के बैठ गए. एम आई गेटिंग इट करेक्ट नाउ? 100%. ठीक है. So my answer to this one would be that I've basically seen the model frameworks of 3 institutions in this. So one is the ABNLP coaching, one is Marshall Goldsmith, which is one of the top coaching institutions in the world. Second one is ICF. Now, when we're talking about the methods in NLP, they're more relevant with the methods of coaching. So when you say that the person has to live that experience in order to guide you further, that's the domain of mentoring. So for example, agar aap, like my leadership mein kahin perplexed ho and I don't know how to basically lead the leadership of my organization, I can hire a mentor who has 20 years of dominant experience in leadership. Nevertheless, if I want to select a coach for this, now this is going to be a very different ballgame. So as a coach, I need to understand the techniques of coaching. So it does not require you to understand anything from your own constructive mind, but to basically guide and navigate and facilitate the client to creating the shift that they want. For example, I was basically coaching somebody from aeronautical engineering. So there was somebody who said, I can't complete the research project, that basically is there. Now, when I can't complete, I want to find the linguistic patterns. I can't complete my, research project. So that's kind of like a limiting belief. So I understand that this is an NLP domain. I fix it because it's falling under a certain domain. Then I would want to basically navigate them through asking intelligent questions. So what coaches utilize is based on coaching. So for example, they say, well, it's because I couldn't do some,
motherboard wiring, engineering frame. Now it's something that I don't really know about, but it's okay. Why have you not done it? What's stopping you from doing it? What can be possibly done, to achieve this? So I'm scheduling more in terms of their behaviors based on, the selective set of questions. And that's the same methodology that all the coaches around the world follow. You're not supposed to be expert at that. Now for relationships, what you specifically mentioned for relationships, there is a criteria for relationships. Now, that's only when you use the word relationship. Number one, you got to be understanding that when you take up most people take relationship coaching one-sided, and that's where the problem comes in. Relationship coaching has to happen with both the couples agreeing to undergo into a relationship coaching. So, you work separately with the wife, you can work separately with the husband, but they both have to mutually agree. And in Pakistan, largely, if you see the arena, it's only one person who's agreed कि हाँ मैं तो बदलना चाहता हूँ but मेरा शौहर नहीं आएगा या मेरा शौहर आएगा तो मेरी wife नहीं आना चाहती. In that case, we simply basically tell the client that since this is a relationship-based domain, we cannot take this up at this given point. Yeah. ठीक है. आप एक सवाल आया है स्क्रीन पे जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसको Is this Adnan? Yeah. To understand the psychological behavior, it takes 18 years of education, and you're telling me the person can evaluate the person by becoming an NLP. No, I'm not telling you that. So for psychological behavior, if there are 18 years that are required, you must do them. Behaviors, for example, in terms of how to help somebody to come out of negative thinking, limiting belief, or negative emotion, or an inner conflict, that does not require 18 years. So I'll give you an example. For example, if Irfan is there, Irfan is one of the top guys that I know in terms of when it comes to training and technology together. So what I need to see is I need to find out, what are the ingredients that Irfan really, utilizes. How does he, how the heck is it that, he gets up in the morning with all that passion and, resilience that he wants to do? What is his belief system? What are Irfan's value system? What is Irfan's thinking pattern? If I'm able to decipher the meta programs, I can at least take that same strategy, install it in my head, and basically adapt myself to create neural networks that would help me to achieve the same results. I'm not saying that I'll give the brilliance that Irfan has. I'm not transferring the brilliance. I'm, transferring the technology of basically the way he operates. So yes, psychology is a very respectable field, and it has 18 years of foundations to do it. But they're understanding the science and processes behind it. For example, what causes depression, and they've got thousands of theories behind why depression occurs. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है. Formula 1 रेसिंग है ना जी. अब Formula 1 रेसिंग पे जनाब जो उसकी स्पीड होती है, अगर उसकी जी फोर्स चेक की जाए तो जी फोर्स उसकी होती है कोई G11 की होती है ना जी. आमतौर पर मैं G7 पे बेहोश हो जाऊंगा या G6 पे जाके बेहोश हो जाऊंगा. आई कैन नॉट टेक इट. तो 233 माइल की जब हम बात करते हैं, उसको जी फोर्स को जब आप चेक करते हैं, या जेट फाइटर प्लेन जो जेट फाइटर पायलट्स होते हैं, तो मैं उसकी टेक्निक समझ के तो मैं तो जेट फाइटर नहीं चला सकता ना. मेरी बॉडी नहीं. वो मेरे ख्याल से अदनान का सवाल है, अगर मैं उसको जानना चाहूँ, वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट समझना. आपने कहा जी मैं उसकी टूल और टेक्निक लेना चाह रहा हूँ. चलें जी, आपने इरफान तैयब की सारी टेक्निक ले ली, ग्रेट. लेकिन अगेन उसको अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ चाहिए. 18 साल की स्टडी की टेक्निक सीख के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेरा यहाँ आर्गुमेंट. इसको हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि सवाल लारिक बहुत है. No, don't worry. But this question. So what you're actually saying effectively, as I understand, you can study 18 years of psychology, and then you can become a jet fighter plane pilot. I'm trying to say कि practices की आपने बात की कि हम उसकी practices लेते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं. लेकिन अगेन जो उस 18 साल से गुजरा होता है ना, उसके सुनने, समझने और करने के तरीके में बहुत फर्क होगा, जो कि एक इंसान 8 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, या 1 साल भी लगा के कर ले. बस मैं we're seeing this from a different context. Let's try to be very clear on this. I don't need to have 18 years to understand the methodology of how somebody could become a jet fighter pilot, right? I could understand his ambitions, and I can navigate them to basically undergo that process. And it might take him about 15 years to become a jet pilot, fighter plane, type. Do you understand? We want to basically fix his mindset basically towards going success. It has nothing to do with, but let's say if the person says, I have a disorder, I have a, I have a, mental disorientation in terms of I have a neurological conditioning that I cannot basically, I cannot see. Maybe there's some person with the eyesight, Now that also does not go to a psychologist. That does not go to an NLP practitioner. That does not also go to a psychiatrist. It goes to a neurologist.
somebody who can basically see why the eyesight is weak. You see, every discipline has their own charms, and it's not fair to basically make those comparisons. For example, I could, imagine somebody arguing for one full day saying that psychologist is not better than psychiatrist because they've got medical accreditation of clinical practice. It would be, completely insane. What we can say is that psychiatry is an amazing field which has its own resources to help clients to go to point A to B, and so does psychology, and so does NLP. But NLP more focuses towards, again, very basic areas such as negative thinking, limiting beliefs, inner conflicts, and values. चले, आप माशाल्लाह अभी बहुत काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में काफी बिजी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मैं देखता हूँ आप काफी ट्रिप्स कर रहे होते हैं. आपने माशाल्लाह बहुत बड़े बैचेस और बहुत एक जैसे कहते हैं ना बल्क प्रोडक्शन जारी है. तो एनएलपी प्रैक्टिस माशाल्लाह बहुत ज्यादा बन रहे हैं, वक्त की जरूरत भी है. अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि जी मैं किसके पास जाऊं, ये जो सवाल था मेरे ख्याल से ये सवाल अभी तक नहीं समझ आया, किसके पास जाएं, ये कैसे डिसाइड करेंगे लोग? बहुत सारे एनएलपी तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? ओके, सो के पास जाए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं वो आपकी जो बेसिक टेक्निक है वो समझ लेता है, उसके लिए आपको 18 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं एज अ यूजर जानना चाहता हूँ तो मैं किसके पास जाऊं और कैसे डिसाइड करूं किसके पास जाऊं? So my 20 साल वाले के पास जाऊं. It's not about the 50 saal and the 20 saal in this context. So what the context is basically, for example, Irfan, how does one decide? So my question would be, how do you decide when you want to basically go and buy a cell phone, for example? What's your deciding criteria? So people have their decision criterias, right? Mm-hmm. And that's what we call hierarchy of ideas. So when they decide, where they want to basically go, they explore themselves. Now, of course, if somebody isn't advertising themselves, they might be having referrals. So they might have heard the reference sense. Most of my clients, if you really ask me which people come to me, the people that come to me are the people who have either done training from me or their friends and family members or people through referral. My entire business is referral generated. So it depends how they basically want to. ढूंढना होगा तो मैं ढूंढूंगा कैसे? मैंने अभी सर्च किया कि जी कितने एलपी प्रैक्टिशनर्स हैं. भाई आपकी वेबसाइट पे गया, अरसलान लारिक एंड को पे गया, वहां पे मुझे पता लग गया इतने बंदे. मैं कैसे ढूंढूंगा कि मुझे आयशा के पास जाना है, अब्दुल्ला के पास जाना है, अरसलान के पास जाना है? क्या एक एलपी प्रैक्टिशनर जो आपसे ट्रेनिंग लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है? Yeah, by interviewing. बेहतर आसान लफ्जों में मैं कहता हूँ जी मुझे टॉप लेवल चाहिए, अरसलान बेहतर है या आपका किया हुआ कैंडिडेट बेहतर है? When I was going through my sense of problems and challenges, these are the few questions that I asked my trainers, right? So I basically called up my trainer and I asked him these few questions. Number one, sir, how many clients have you basically taken? How many hours of, therapy have you actually done? And what is your success rate? Can you basically link me to 3 testimonials from your site? आप मुझे कोई भी 3 ऐसे clients अपने बता दें who might have taken therapy from you and had really good results. So I took those results also from them. And then what happens is, let's be honest. So if I've basically signed up for a coaching program, and if I take the first 1 hour, that 1 hour should decide whether I want to continue or not continue. Does that make sense? After that 1 hour, if you continue, then कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा डिसाइड करने में कौन. अच्छा चलें ये बताएं जनाब, एनएलपी जनाब बड़ा अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है. आजकल जनाब लोगों का स्ट्रेस लेवल भी हाई है, सिचुएशन भी जनाब सही चल रही है ना जी. तो इसमें ये इफ आई हैव टू आस्क अबाउट, अगर कोई एनएलपी में अपना करियर बनाना चाहता है, सो व्हाट्स इन इट फॉर मी? What's in it for them? Well, that's the question that we basically ask, individuals who actually come to us. So we don't basically take on any person. So if somebody says, I have money, I want to do NLP. मनी का टूल है ये बताएं, आसान लफ्जों में पहले ये बता दें. Is it a money making tool? Money making tool? Of course, because when any successful individual that you're looking at now, I wish I had that 3 hours to explain you what Claire Graves' value levels are. Value. Any successful entrepreneur, जिनको हम लोग कहते हैं ना कि ये अंदर से मेमन है, they're not अंदर से मेमन, they're actually at values level 5, and value level 5 is an entrepreneurial level, and not everybody is at that level. So we want to basically ask the question. So when clients come to us, my sales executives ask the first question: क्यों आना चाहते हैं? Why do you want to do NLP? And somebody says, I want to do NLP because I want to change the world. We want to basically understand. मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, तरक्की नहीं हो रही है. Right. I want to make a career for myself and a living for my family. ये वजह काफी नहीं है मुझे करने के लिए. It's perfect. So, but I would. नहीं बनेंगे आसान लफ्जों में.
It will. So whatever you basically select for yourself, you would want to basically understand that, and we would want to basically take you on that journey. But it's what you would want to really commit for yourself. So my question would be, Irfan, how much money do you really want to make for yourself? How much money do you want to make? No, seriously. तो वो ठीक है, How सही much है, तो money do you want to मैंने make? 2 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूँ, चले. Great. Are you making that much right now at the moment? No, I am No. short. You're short. And what would be the percentage of shortage? Let's assume. Around, Like how I'm much? making 55,000 right now. You're making 5,000, right? 55, So 55. okay, 55,000. So fine. Let's set up progression areas, and let's try to mark a date where I can tell you what the coaching contract would look like. What would be our relationship between coach and coachee? So then let's try to work on it. Let's try to see if, let's jack that up to 100,000 rupees, and let's just see if it progressively can go up to 100,000 rupees. आप उसको कोच करेंगे और ये बताएंगे कि NLP से आप you can make a living out of yourself and you can make up 100 or 200,000 based on your own efforts as well. सारा काम NLP नहीं करेगा, आपको खुद भी कुछ करना है. Let me put it this way. In NLP, what we say is that the responsibility is towards the client, and that is 100% responsibility. Irfan, as a coach, I can put in my 200, percent of effort, but that's as a rudder. It's as a facilitator to basically help the client to find what they really want to achieve in their life. But the struggle and the amount of effort that the client has to put, they have to progressively put inside them. Yeah. For example, some client came to me and he said, Arsalan, I want to be rich. I got it. असल में time कम है और वाला ज़्यादा है. I'm sorry, I got to tell you. So the clients come to me and they say, okay, Arsalan, I am rich and I want to be more rich, but I'm not going to do it. I said, okay, fine, then Allah Hafiz. I got it. Well said. Beautifully said. ठीक है. अच्छा असलान, मैं एक जानना चाहता हूँ, सवाल ये है कि मेरे पास जो सवाल है, NLP की सर्टिफिकेशन हम कहते हैं कि जनाब ये AB NLP से सर्टिफाइड है बिलफर्ज, लिखा होता है माशाल्लाह, काफी जगहों पे लिखा होता है. इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है बिलफर्ज, अगर हम जानना चाहें? कोई इंसान अगर कहता है कि जी कर तो मैं रहा हूँ और माशाल्लाह लाख रुपए, 1,20,000 रुपए जो भी देने में दे भी रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या ऑथेंटिसिटी है इसकी? मैं जनाब कर तो लूं, लेकिन अगर एक बंदा जो कि मैं यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है ना, एक इंसान क्रॉनिकली डिप्रेस्ड है ना जी, या बहुत बीमार है, अब वो इंसान अगर कह रहा है मुझसे कि मैं NLP की सर्टिफिकेशन वाले बंदे के पास जाऊं, इस सर्टिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है? एक डॉक्टर है, उसकी एक पूरी इंस्टीट्यूट होता है, हर चीज होती है, तो ये क्या सीन है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या, अगर इस पे बताते चले. Good. So any basically degree program, whatever degree program that you're basically going to enroll in, has an institutional credibility. So what happens is that if I'm going to go to Aga Khan, for example, let's say for my medical degree, so the Aga Khan becomes the authority. And the way the certification process becomes is that AB NLP is the parent body. And the authenticity is that it has patent rights registered in 130 countries. And, Ted James and Adriana James have institutions operating worldwide. So there are over, 100 institutions that are operating, which on regular basis work with psychologists. They also work with psychiatrists. They also work alongside with complementary health professionals. And we're testing around the clock all the clients. So for example, even me in Pakistan, I, as a master, coach and trainer for AB NLP, I have got instructions from Ted James. So, for example, I have on my panel a psychiatrist. So I go to him, and with the permission of the psychiatrist, where they've referred me on board, and I'm studying the case of, let's say, paranoia, dyslexia, or, for example, paranoia or schizophrenia. And what I do is I try to test these, interventions of NLP. And what we realized is that every time we use these techniques, it brings a 1 to 2% change every single day into a client. We're not saying it fixes it. We're saying it manages it, it controls it, it modulates it. And whenever I have some new learning, I share that with my board. मेरा जो सवाल है ना, ऑथेंटिसिटी क्या है सर्टिफिकेट की? आपने बताया बहुत जगहों पे ग्रेट, आपके सर्टिफिकेट जब आपसे लोग कर रहे हैं या करते हैं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या AB NLP की वेबसाइट पे जाएंगे तो नजर आएगा वो नाम? 100%. So if you're a trainer, you'll be, accredited. You'll be listed on that training website. In countries, if you basically get a verification done, so the board can always verify that they are in the complementary services, association and therapy association, that they have actually done that, certification for themselves. मैं एक सवाल करूं बड़ी इज्जत से, हाथ जोड़, मैंने आपके लोगों के नाम ढूंढे, AB NLP की वेबसाइट पे नहीं नजर, ऐसा क्यों? Have you? Because it only accreditates the trainers. Right now. Yeah, it accreditates the trainers.
व्हाट डज दैट मीन? देखिए ना, मैं तो आपके पास आया, आपने कहा मेरा नाम होगा, Sure. आपने अभी खुद बताया, अब मैंने कहा मैंने नाम ढूंढे हैं जिन्होंने आपके थ्रू किया, उनके नाम नहीं, एबीएनएलपी की Okay. वेबसाइट। So you're not तो talking about क्या? a trainer. You're not talking about a trainer. You're talking about people who are master practitioners and practitioners. My name is there on the website as a trainer in जो आपके Pakistan. थ्रू कोर्स करेंगे उनका नाम एबीएनएलपी पे नहीं आएगा, क्योंकि वो No. कोचेज है, प्रैक्टिशनर है या मास्टर प्रैक्टिशनर है, दे आर नॉट Yes. सर्टिफाइड ट्रेनर, ऐसा ही है। They're not certified trainers, and they're not allowed to teach other people. They're allowed to basically use it for themselves. They're allowed to use it for their ओह, clients, but they're not allowed to teach it to anyone. If they teach it, that'll be a conflict of interest because they don't have the required skill set of teaching and ठीक है। training people on this technology. But there is a verification process for the people who are students. So when basically they apply for visa and they basically go abroad and they want to do therapy, they want to do coaching over there, they have to apply for membership. And that membership form is available on the ABNLP website. It's just like ACCA. If you've ever done हाँ, लोगों में ACCA? सवाल पूछूं, मैं समझ गया, Yeah. वो जवाब आप जो दे रहे हैं, आई गॉट इट, बिल्कुल सही है। Sure. वो मैंने उसको सम अप भी उसी तरह कर दिया, वो मेरे ख्याल से वहां तक ठीक है। सवाल मेरा ये बताएं, चलो ऑन अ लाइटर नोट, बेगम पे एनएलपी अप्लाई करते हैं, फायदा होता है? बहुत सारे शादीशुदा लोग मेरे ख्याल से समझ सकते हैं। On a lighter note, the thing is, what do you do with a wife who's already trained as an NLP अब वो person? तो So my देखा, wife is, इतने खुशकिस्मत सारे थोड़ी होते हैं। I know. So let me be honest in that. If it's with your family members, do not use any coaching intervention with your own blood relatives or family members, because as a part of any intervention or any therapeutic intervention, we never apply the concepts of therapy onto our loved ones, where we could be associated to the area of problem. It's basically like this. For example, if I was with my wife and she said, "मुझे गुस्सा आता है," and I ask her, "क्यों आता है?" "क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ." So you really can't apply that technology to them. और दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं, इसका रिश्ते से ताल्लुक है, जो आपने पहले बताया। Of course, but nevertheless, what I can do is it has improved our relationship to a very significant level. Aaj tak, me and my wife would always want to go and revisit those concepts. It helps us to mature in our, intuitive, understanding of relationships. जितने लोग सुन रहे हैं, आप भी कर लें, बेगम हो, शौहर हो, भाई बहन हो, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। फायदा है, अपने लिए ही फायदा, किसी और का ना। आगे मेरा एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा सीरियस सवाल है लारिक। मैं चाहना चाहता हूं, आपने किसी की कोचिंग की ना, एक बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। आपसे मैंने कोचिंग की और जनाब मैंने कहा जी आपका जो सर्टिफिकेट वाला सवाल था मेरा, मैं वो सर्टिफिकेट लेके यहाँ आता हूँ और यहाँ के मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे कंप्लेन करती जाती है मेरी कि इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्या आप मुझे बैक करेंगे? मैं पाकिस्तान से करके आया हूँ, अमेरिका आई हूँ, आप मुझे बैक करेंगे? No, I won't have to, because when I'll give you the certification, you will, deposit that. You can take a screenshot of that and scan it and send it to the American board. The American board will always provide you with a level of assistance in terms of should anything go wrong. But yeah, now where would they not support? सर्टिफिकेट देखा, I'm sorry I'm cutting you, but मैंने आपका सर्टिफिकेट देखा है, उसमें कोई रजिस्टर्ड मार्किंग नहीं है। Registered marking, yeah. So our license certification that we give is because in Pakistan we're the basically patents for that. As soon as they apply for membership abroad, they become on the panel of ABNLP caretakers, and they have a membership code for that. That's one thing. मैं सिर्फ सादा सवाल करता हूँ ना, आपने बताया कि जी बाहर जाके रजिस्टर कराना है, ठीक है। सवाल मेरा मुद्दा यहाँ ये है कि आपकी आवाज चली गई है लारिक। Can you hear me? I think you're on mute. Your voice. I can hear you. आ गया। सवाल मेरा ये लारिक, आप कहते हैं कि जी $1,200 है या 1,20,000 जो आप ले रहे हैं या 1 लाख जो भी आपके मांग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इस अमाउंट में यूर इंटरनेशनली रजिस्टर्ड, और वो सर्टिफिकेट भी मैंने देखा है जो वो दे रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल मार्केट भी है, तो आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आप ये बता रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके लिए उनको एडिशनल कोई कॉस्ट देनी होगी। Am I getting it right? 100%. It's an annual membership fee. So there's an annual membership fee that you have to basically pay. It's just like I did my ACCA, but then again, in order to become a member of that association, I have to pay them annually, which is a very nominal fee. हम एक सीरियस सवाल पे और चलते हैं जनाब। मैंने अरसलान लारिक एंड कोर्स किया, मैं एक जनाब बहुत सीवियर केस लिया हुआ है मैंने, है ना जी, और जनाब रात के 3 बजे मुझे कॉल आती है ना जी कि जी बंदे की जी वो, क्योंकि डिप्रेशन को टाइम बता के तो नहीं आता ना कि सुबह 9 से 5 आएगा, किसी टाइम भी आ सकता है डिप्रेशन, तो बिलफर्ज उस बंदे ने मुझे कॉल किया, मुझे थकन भी हो रही है बहुत ना लारिक, आई एम सो टायर्ड, का दिन बहुत गुजरा है, बीवी ने भी जनाब बड़ा हार्ड टाइम दिया हुआ है। अब मैंने जनाब कॉल लिया, मुझे जनाब मैंने अपनी एनएलपी टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी, ठीक है जी, जैसा आपने बताया कि कोर्स करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
यहाँ तक ठीक है? अब जनाब वो बंदा जो है, वो मैंने उससे बात करनी शुरू की, सामने वाले इंसान ने मुझे कहा जी मुझे जो है ना अब वो जो है बोर्डम फील हो रहा है, जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है जी, और उसके बाद उसका फोन बंद, ठीक है जी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, और अगले दिन पता लगता है जनाब साहब ने खुदकुशी कर ली। तो आप कैसे 24/7 अपने लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पहला सवाल। और ये इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी लेना, और इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी को 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर कोई बोले मैं कर सकता हूं, डू यू थिंक दैट इज फेयर? No, that's not fair. So number one thing, if somebody calls me and says, okay, I took up a client who was depressed, and so first of all I asked, well, who told you to take a depressed client? So basically, do you really feel NLP really could address that area? I'm sure मेरा काम नहीं बन रहा था, मैं बुरे वाला में रहता हूँ यार, बुरे वाला में इतने लोग नहीं है, यहाँ तो ज्यादातर लोग परेशान ही है, क्लाइंट ही कोई नहीं है, मैं क्या करता? But अब तो ले लिया। I totally understand. I know, but we really don't support that. For example, that's why I say that all our candidates should get membership. Tomorrow, if they start advertising that NLP can cure cancer, so then they're responsible for what they go through. We're not, basically responsible for the claims that they produce. So, and number two, ये कि रात को 3 बजे client का phone उठाना, would that, come into the ethical domain of basically how to manage and handle clients? So we basically take our clients through. तो या therapist हो, वो तो उठाता है phone. On international practices, they are abide by that. क्योंकि वो client ऐसे से डिप्रेशन फोन करके नहीं आता, या टाइम लेके थोड़ी आता है कि कैलेंडर बुक कर लो, वो तो कभी भी आता है. But then again, for NLP, that's for people who manage depression. But that's for psychologists that you're asking, or psychiatrists that you're asking. For NLP practitioners, we always encourage our clients to basically take up individuals who are going through a struggling phase, and they really want to make consciously and unconsciously the effort to come out of that phase. And then we're willing to collaborate with them in working, and we set certain modalities of how we work. कर सकते हैं NLP ना, NLP की practitioner problem solving कर सकता है. Problem solving? Help कर सकता है मेरी problem solving में, कि अगर मेरे पास कोई problem है या कोई issue, उसमें help कर सकता है NLP practitioner. For sure, if you can narrate what the basically area is. For example, if the problem solving, बात कर लेते जनाब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, और मेरे जनाब बच्चे भी हैं, बेगम भी है, और जनाब हम शादीशुदा लोग हैं, और हमने अचानक से कहा कि जी मुझे जो है बड़े कुछ इश्यूज हैं, जो वो इश्यूज जो मैं अपने बाप और भाई से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अब मुझे एक बात बताया कि मैंने एक NLP प्रैक्टिशनर से डिस्कस किया, ठीक है जी, आगे जाके मैं उसकी फीस नहीं दे पा रहा किसी वजह से भी, बेगम ने मुझ पे सू कर दिया, मेरा घर भी चला गया है, गाड़ी भी चली गई है, और जनाब उसने क्या एश्योरेंस है कि वो मेरे सीक्रेट्स को लीक नहीं करेगा, आइदर ऑन द बेसिस कि जनाब मैंने उसको पैसे दिए या नहीं दिए, ये एक सेपरेट इशू में सिर्फ ऐड ऑन कर रहा था, बट इसकी क्या किस तरह एश्योर होता है कि जनाब मेरा जो सीक्रेट है वो सेफ रहेगा? क्योंकि आप इंडिविजुअली कैंसर का भी इलाज करा सकते हैं, नहीं लूं मैं भी NLP की रजिस्ट्रेशन, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में केड़ी सर्टिफिकेशन, लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेनर है, अरे पौके के इंटरनेशनल ट्रेनर है, आज तक यहाँ से लोअर नहीं गए, बोलते हैं कि हाँ जी इंटरनेशनल ट्रेनर, उधर तो सब दुकान चल रही है. हाउ यू आर इंश्योरिंग दिस पार्ट? Yeah, by keeping my ethics to the highest standards. Irfan, that's how I will say. Basically, I keep my standards of ethics highest to any level. If some clients basically call us and they say that they can't really afford a process, we have helped them. For example, let me give you a reference of we have trained approximately 3 to 4 individuals who were visually impaired. So I took that entire effort of getting their entire NLP manual constructed into the binary code with which they can basically touch and feel and basically go through it, and I help them to get that certification free of cost. We have indefinitely helped a lot of individuals. We've sponsored them on a personal level in terms of learning NLP. We were the first people in Pakistan to even help transgenders understanding how to basically use NLP techniques in terms of their success model. But we really can't be vouching for the guarantee of every single individual. It's like, for example, somebody who graduated from Dow Medical College tomorrow and was a doctor and committed suicide. Dow Medical College is not responsible for it. They're only responsible for stamping the set of degree at the level of competence that they had completed on that particular year. And that's how evil ban jaye to ye institute ka problem nahi hai. It's not actually, and because this is what also one thing we do, which not many other people do about this. So if you come into my NLP training once and you've only paid once, so for a lifetime, we would allow you to re-attend that same program over and over again. Only in case if there's a day cost in terms of food only that you'll have to basically pay.
but otherwise it's complimentary. You don't have to repay for any time. So we give them a lifetime support so that they can come back, revise, re-go through the concepts, bring their cases along. Also, if they have that confidentiality of agreement, they may remove the names and they can discuss the areas that they would want to talk about. असल में हम सेशन में 1 घंटे से भी आगे चले गए, मैंने अभी टाइम देखा और मेरे पास प्रॉम्प्टर आना शुरू हो गया। तो हम एक काम करते हैं, लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द सेशन एंड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे पास है, वो लेने के लिए हम इसको 15 मिनट और देते हैं ना, 1 घंटा 15 मिनट हम लेके जाते हैं, तो 10 मिनट हमारे पास मोर है। सवाल मेरा आपसे ये क्विकली, एक बात बताएं, अभी जो ये स्क्रीन पे भी आ रहा है, इससे रिलेटेड मैं अगर करना चाहूँ इसको, मैं इससे तो नहीं कहूंगा रिलेटेड, लेकिन एक सवाल था मेरे पास जो आया था, वो ये कि मैं कई मसलों के लिए डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे मसलों के लिए गया, आज तक एक डॉक्टर ने एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, कोच रेकमेंड नहीं किया। Right. And why is that? That's what you're... Yeah, क्यों? Okay. So it's basically also because of the changing evolution of how people are looking at various interventions throughout the world. For example, in Europe now the word therapy itself is considered as a traditional word. So they don't use the word therapy; they now use the word coaching. So that's how they've replaced that. In other words, also, if you ask me in other contexts, in terms of why doctors have not recommended. So you're talking about a certain selected set of doctors who have not recommended. There are a number of doctors who have actually done NLP and they are practicing it, and they are our graduates, and they've also had very good success with it. For example, Dr. Hani is a psychiatrist. He's in Multan. He's a practicing psychiatrist. He uses NLP and he has got really good results with it. But these are perspectives again. So Irfan, like let's say not every 5 people would be on board. But I think what people get really agitated on is when you go to a psychologist and you say, I can do everything that you can do in 6 days. That's going to trigger. That could basically give off a very different message. That's a wrong messaging. Yeah. But आसान, देखिए ना, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, रेकमेंड क्यों नहीं करते? अगर ये इतनी अच्छी चीज है, why it is not recommended? Not by any medical profession. कोई मेडिकल प्रोफेशन इसको रेकमेंड नहीं करता। मैंने यहाँ पे जॉन हॉपकिंस से लेकर के मुख्तलिफ वेबसाइट पे सर्च किया, नॉट इवन वन ऑफ देम रिकमेंडेड इट और इवन एक्नॉलेज्ड इट। ऐसा क्यों? Sure. Let's leave all the let's leave all the websites aside. Sure. Let's leave all the websites aside. I'm only giving you to the people who have given the reviews about it, right? So, for example, Fritz Pro. सवाल बहुत है, हम इस पे सवाल बहुत है मेरे भाई। But I'm actually giving you the names. So Fritz Pro, who's the father of Gestalt therapy, wrote a very beautiful review for John Grinder and also for John Grinder. एवोल्यूशनर पे मैं नहीं लिखने वाला, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ डॉक्टर क्यों नहीं रिकमेंड करता ना। अब आप, मैंने वही कहा, 11 साल का बच्चा भी कर रहा है, 55 साल का बच्चा भी कर रहा है, इसका इनटेक प्रोसेस नहीं समझ आया मुझे अभी तक कि जी एक बंदा रेडी लगा वो कर सकता है, हाँ जी कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा? तो मुझे ऐसा सुन के इनटेक प्रोसेस। Sure, Junaid, but so like let's say Irfan, if somebody's coming to a doctor, let's try to understand. If the doctor can medically help them, why would he refer them to an NLP practitioner? I don't understand the need for it also. Why would a doctor it's like basically me saying that I went to basically a gun shop and they never referred to me, somebody else who was selling oranges. These are two different interdependent, fields. One is if somebody's going to a doctor, I'm sure they must be going to a doctor for, medical purpose. Does a doctor use NLP? Sure. There are a number of doctors who are psychologists who have done NLP. But why would they want to refer if they can handle the situation on their own? I don't understand the concept of that. कॉन्सेप्ट इसलिए लारिक क्योंकि बहुत सारे लोग जब आप बताते हैं ना कि हम लोगों के मसले हल कर रहे हैं और लोगों को कामयाब होने के लिए आगे लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, कोई इंसान जो ठीक होगा ना, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। जिसको क्रिकेट खेलना आती है ना, वो कभी एकेडमी जाता नहीं है, वो पहले अपना हाथ साफ कर चुका होता है, उसको सिर्फ टेक्निक सिखाई जाती है, वो भी वो जो उसके लिए कोच को लगती है जरूरी। ठीक है ना जी? मैं कहता हूँ ये एनएलपी कोच जो है, इसके पास मतलब है क्यों? अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरे मसले हल नहीं होंगे, मैंने आपसे पूछा जी मेरे बेडरूम के मसले, आपने कहा जी हम कोचिंग करते हैं इस मामले में। तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक साइकेट्रिस्ट है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये क्यों नहीं रिकमेंड करते ना? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं लोगों ने ये बात जो है ना थोड़ी अगर क्लियर कर दें, ऑडियंस के लिए भी बड़ा मजा आएगा कि हम सारे साथ चल रहे हैं। I would love to, like for example, let me put this up. Why has no psychologist ever said कि आपको किसी trainer के पास जाने की जरूरत है? Trainers also believe in terms of working towards the success of individuals and creating capabilities and skill sets in them. ठीक है,
चले But what I'm saying is actually, we're talking about the wrong discipline in terms of recommending a different. It's a different subject area. Sure, if some people have. लारिक, अब जैसे मैं नबिया के कमेंट में चलता हूँ, ये कह रही है कि do you think NLP practitioners can become part of a multidisciplinary medical team in hospital settings? Can they find a place in medical stream as an important stakeholder? No, they could find a mainstream in terms of coaching, business, in terms of business of basically doing. होता है, just to clarify, जो लोग सुन रहे हैं, NLP practitioner होता है, okay, तो यानी अगर आप NLP करते हैं तो फिर इस स्ट्रीम में आप आ सकते हैं. Also, Irfan, one question to be clarified over here. So since we offer basically triple certification, I don't only teach NLP. Like I said, we have NLP practitioner, but we also teach the NLP coaching model of the AB NLP. So we basically ingrain that. So I'm not sure if anybody's teaching NLP who's not giving them the coaching mechanism. And if you ask me, can NLP become a mainstream, individual in terms of the medical profession? I have found very great success in that. So for example, all the people who are on our panel, so as an organization, we have certain people who are, with us, and they're partners with us. They are psychiatrists, they're also psychologists, and we work side by side. So I found a breakthrough over there. Is it necessary that everybody should? No. I mean, I just love to explore more. I like to basically take, my skill set to understanding and researching more about how these techniques apply. Is it necessary for all? No. सही है. लारिक, असल में आपकी बात माशाल्लाह, you have done a lot of things. मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जो लोग NLP करना चाहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से ना, मैं शायद लारिक के साथ तो चला जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुनने के बाद मैं आपके किसी कोच के पास. क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पे भी अभी एक सवाल या एक फैक्ट इन्होंने शेयर किया, अगर आप देख सकें और इसका अगर बता सके, तो शायद मेरे दिमाग की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके और साथ साथ मेरी ऑडियंस. अभी तक मेरे पास कमेंट्स. This is a fundamental conflict, what you claim versus facts. Google, the major difference between therapy and a life coaching is that they focus on the work, on therapy focus on the mental health and emotional health of the life. And so it's a 4 paradigms. So let's try to, then you're basically going to ask me explanations for everything. When I'm saying we teach NLP and we teach therapy, so I did mention we also teach timeline therapy techniques. So it's it's timeline therapy technique. Now, timeline is an extraction by basically modeling the processes of Gestalt. So sure, coaching only focuses on the future aspects. With NLP, because the technique that is used in timeline is regression based, and with regression therapy, we do also tackle into the form of past. But we're looking at basic emotions. We're not looking for mental disorders. I think so when it says therapy focuses on mental health, sure, by coaching and by going through the Gestalt and going through the regression process, their mental health does improve, but it improves on a generic format. We're not claiming that it does improve mental health and you should only come to us for mental health, right? It does have a significant toll on that. That's how we're putting it. मैं एक सवाल कर, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया है. वो सवाल ही आया मेरे पास. अच्छा, फिर से कोई गूगल फैक्ट आ गया जनाब. लोग लगता है गूगल यूज करते हैं इसी टाइम पे सारे ना. Sure. If you are like, please by all means hit. Okay. चले जनाब, मेरा सवाल ये बताइए. बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हम सेशन ऑलरेडी 1 घंटा 12 मिनट 13 मिनट पे आ चुके हैं. तो मैं एक सवाल जो मुझे भी लगता है जरूरी करना वो ये, आप कैसे वेरीफाई करते हैं? मैंने आपसे ट्रेनिंग की 5 दिन की, 15 दिन की, इसकी रिक्वायरमेंट की बिफोर आई स्टार्ट कोचिंग अदर्स कितने घंटों की? अगर पहले आसान सा जवाब देते, 10 घंटे, 100 घंटे, 20 घंटे, कितने घंटे की होती है? Okay, so the entire process that we basically communicate to our candidates, previously it was 120 hours. And according to our revised standards, we have increased that to now about 130 hours. So in 130 hours, what we specifically say, and most people, this is a very big misconception. Not everybody comes to us for doing therapy. If you ask me the amount of people doing therapy using NLP from our entire set of graduate list, so out of maybe 300, there might be 10 people who are actually doing it. Most of the entire 80% have actually utilized those tools and techniques how to use it for themselves and become more successful in the very phases of life. मैं अपने सवाल पे आगे चलता हूं. पहले आपने बताया कि जी 120 घंटे पहले था और अब 130 घंटे की रिक्वायरमेंट है बिफोर दे कैन गो फॉर अदर्स. अच्छा, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब घर वालों से बात कर रहे हैं, आपने वैसे ही अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, दोस्तों ने अप्लाई कर लिया, यही 130 घंटे ऐसे ही है ना? 30 घंटे 130 घंटे ऐसे ही. मैंने आप मैं सवाल बनाना चाह रहा हूँ. मैंने 130 घंटे किए, ठीक है जी, और मैंने कहा लारिक साहब मैंने जो है ना 130 नहीं 190 घंटे कर लिए. हाउ वुड यू वेरीफाई दैट? एक डॉक्टर या एजुकेशनिस्ट जो होता है, जब किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं ना,
तो खासतौर पे इंसानी मामला है, बड़ा सीरियस मामला है, जिंदगियों का मामला है। कोई बच्ची है, हमें किसी की बच्ची है जनाब, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए कि जनाब वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। बहुत स्लो लर्निंग कर रही है, ऑटिज्म बड़ा आम है आजकल, है ना जी। मैंने कहा जी मेरे बच्चों को आप कोच कर दें जरा सा, तो आपने कहा जी हम टूल्स एंड टेक्निक्स बताएंगे कि बच्चे कैसे अच्छा दौड़ते हैं, जल्दी लर्निंग स्पीड उनकी कैसे बेहतर हो सकती है। तो मैंने कहा जी एनएलपी कोच को ले लेते हैं, ये अच्छा गाइड कर देंगे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, आप एज अरसलान लारिक इनको कैसे वेरीफाई करते हैं कि इरफान तैयब झूठ नहीं बोल रहा है आपसे, कि उसने 2000 घंटे किए? हाउ डू यू वेरीफाइड भाई? मैं तो Okay, बैठा so हूँ जाम में, आप बैठे कराची में, आप कैसे verify so करते हैं? sure. Our set of basically verification is that when we basically refer from our institution. So, for example, there are a lot of our graduates who have again and again come and revised their NLP practitioners. So we're aware of their track performance. They have shared with us, their assignments, their projects, how they basically constructed learnings for other people, and we also ask for people to fill in their log sheets so that we're aware of how many hours have they really invested in, and we ask them about what are the success stories that you basically created for yourself. Now, those of them who do submit, we basically project them as very successful coaches. So we, basically, there are some people who are doing really, really great work. For example, there's Dr. Sanna. Dr. Sanna is an intersex educator. So she works with transgenders, all the LGBTQ, areas. She's using NLP very, very effectively, and she's, constantly providing us feedback. मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है, आपने बताया वेरिफिकेशन का कि आप शीट्स लेते हैं उनसे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। भाई मैं झूठ बोल दूं, मैं क्या मुम्मा, जैसे हम करते क्या थे स्कूल में असाइनमेंट, याद होगा यूनिवर्सिटीज में। Are you asking me that for me to basically certify you, what are the criterias? So me to basically झूठ बोल दूं मैंने सारे 2000 घंटे करा दिए, भाई आपको कैसे पता मैंने 2000 घंटे कराए? मैं झूठ बोल दूं, यानी मुझे इरफान तैयब को एक बंदा ढूंढता हुआ आता है, उसने कहा यार मैं एनएलपी पे देखा था, आपने लिखा था आपने 25,000 घंटे किए। यार 25,000 घंटे कैसे किए? मैंने लिखा, मेरे सर्टिफिकेट में लिखा अरसलान लारिक इनको। तो मैं जानना ये चाहता हूँ अरसलान लारिक इनको ये कैसे वेरीफाई करती है कि वो इंसान एक no, we basically no coach. कोई भी So our coach, कैसे करेंगे हम मामला? Sure. Our coaching institution does not basically, keep track record of how many coaching hours are they doing, and we don't even back them up for the number of coaching hours they've done. Our standard of certification is have they basically completed the technique, the intervention in front of us, and they have completed both sides. So they were able to do it for the coach confidently, and the coach was able to do it for the client confidently. So if they've done that process both sides, that's good enough for us to understand, their competence level. And we ask them in terms of, we have got tests and interviews by which we endorse them. Once they're certified from us and they go back, it's their personal responsibility. How many times do they come back to us? That's based on आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और ये आप खुद करेंगे। तो जो भी बंदा अगर किसी एनएलपी कोच को देखने जा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, डू वेरीफाई। जैसे हम हर चीज के लिए जब शुरू में बताया कि अपना होमवर्क करें, आप उनसे काउंटर करें, सवाल पूछें, ऐसे ना चले जाए, राइट? They could also call up our institution, and we would always want to basically, we can always let you guys know. One guy that I've basically been really, fond of, and is also a mentor, and is an amazing psychologist. His name is Max Babri. I don't know if you've heard about Max Babri. बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जानते हैं उनको. Amazing guy. So, one authentic person that I've found that, even to date, he basically updates himself. He keeps on revising his concepts, and that's why he creates that influence. That is why people would pay to go into, one-on-one intervention session of hypnotherapy with Max Babri. So it's for the, trainer to create their own individual, standpoint, where the clients and with the general, public can trust them for the results. एक्सेलेंट लारिक, एक लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि हम 1 घंटा 18 मिनट हो गए, अपने टाइम से भी ऊपर जा रहे हैं, और माशाल्लाह सवालात फ्लो, पीपल आर फॉलोइंग यू। अगर ये लास्ट सवाल हम ले लें तो फिर मैं आई विल अप्रिशिएट दैट। सवाल है, I'm interested in knowing how you help people becoming practitioners on something that's very interrelated to what therapist does. And also, how do you do that in 30 days rather than 4 years of bachelor degree? Well, let me put this, as a straightforward. So we're basically not creating, try to understand that as a perspective. I'm not creating psychologists. I'm not creating psychotherapists. I'm not creating psychiatrists. These are the people who have already done it, and then they sometimes choose to do it with us, and they understand more modalities. We're just talking about teaching people to have a little bit set of more modalities. It's like a toolkit.
So if you're basically going and you're working in a hardware store, you will require hammer of different sizes, screwdrivers of different sizes. So this is a very different flavor. This is an additional add-on toolkit. So if people have that, if somebody's a trainer and knows NLP, would be much more effective trainer because he's expanded his empowerment zone. He's expanded his comfort zone. He's expanded on his resources. If somebody's a housewife and does NLP practitioner and goes back to home, would be a better human being in terms if they're really responsibly using those tools and techniques. It's not only about understanding. There are thousands of people who have read more NLP books than I have ever read. But they might not basically walk the walk and talk the talk of NLP. So we want to ensure this as a personal responsibility, and we want to basically create more set of awareness. Yes, there is one claim that we do initially make, and that's by the references that I'm giving. I have had the honor and privilege, and I'm really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for this, and I'm really thankful for clients also for trusting me. There were clients who came to me who were in a severe sense of depression, and they went through the interventions with me one-on-one. They found great breakthrough in that. Nevertheless, again, as an institution, I have people working with me who can, authenticate whether I can take up a medical condition. So we have a panel of psychologists, we have a panel of psychiatrists. मुझे अगर समझ आए ना लारिक, एक बात आपकी समझ आई है, आसान लफ्जों में अगर मैं अपने लोगों के लिए सम अप कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हमारी उर्दू भी है, तो बेहतर ये उन लोगों के लिए जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, पहली ये बात। दूसरी बात, उससे ज्यादा बेहतरी उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट है, एक थेरेपिस्ट है, उनके लिए तो बहुत ही आला है, कुछ उनको दिमाग का सारा पता है। लेकिन अगर एक बंदा जो कॉमर्स पढ़कर आया है, उसके लिए शायद अगर वो एप्लीकेबिलिटी करेगा भी, तो उसके लिए उतना बेनिफिशियल शायद वो अपने ऊपर है कि कहां तक लेके जाना चाहता है, बाय एडिंग ऑन मोर कोर्सेज, कोचिंग मॉडल, एज यू सेड ट्रेनर मॉडल। अगर वो उस पर जाना चाहता है तो शायद वो एक बहुत अच्छा मकाम बना सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो इन लोगों को होगा जो कि इसको अप्लाई करना चाहते हैं, नियत ये हो, सफाई से, ईमानदारी से। दूसरा ये कि हम जब इसको अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो जो उस रेलेवेंट फील्ड में, जैसे आपने ट्रेनर की बड़ी अच्छी मिसाल दी, यार हमारा तो काम ही होता है जिंदा ही ऑडियंस के लिए कि मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है, तो जब मैं समझ सकूंगा तो ज्यादा अच्छा अप्लाई कर सकूंगा। एम आई गेटिंग इट करेक्ट लारिक? और मैं हैरान हूं, इतना जबरदस्त हुआ है, बट आई थिंक हम ऑलरेडी 1 घंटा 21 मिनट आगे जा चुके हैं। व्हाट डू यू हैव, आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं, एनएलपी किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आसान जबान में अगर उर्दू में बता सके तो बड़ी मेहरबानी, छोटा सा जवाब आप कर सके। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। सो हमारे पास जो रेंज ऑफ ऑडियंस जो आई है फॉर अटेंडिंग एनएलपी प्रैक्टिशनर has been as young as maybe a 12-year-old. There was a 12-year-old female. So only criteria that we kept for them was that you should know and understand English as a language. Because sometimes मुझे उर्दू में थोड़ा सा challenge होता है. So the only criteria that I kept for them is that they have fair understanding of English and they can attend. That 10-year-old girl, when she did NLP practitioner, now she's not doing therapies for other people, but by God, she's getting results. Her education standards have improved. Our grading structure has improved. She's started to enjoy life even much more, significantly than any other people in her teenage circle as she moves through the teenage phase. I have had people who have been 80-year-old and they came to an NLP practitioner. They understood it from their model of the world and they were able to use it. I think it's a very quick, 80-year-old. That was amazing. हमारे यहाँ तो 55 साल में बंदे को जो है हेल्प की जरूरत पड़ती है, but that's interesting. That's really interesting. I like that. Yeah, this 60-year-old, so this 80-year-old person that I was actually working with, he said, Arsalan, if I knew this, I would have been more flexible in certain of decisions that I've actually taken up in my life. And he, the way he thanked me was, something that was so, befitting. You feel so significant inside. And I say again, the change is by the client. जो भी चेंज है वो क्लाइंट खुद क्रिएट करता है. We never have to get into the sense of ego कि मैंने किसी को ट्रीट किया या मैंने किसी को क्योर किया है. Even if it's a psychiatrist working, psychologist working, or NLP practitioner working, Shifa is from Allah subhanahu wa ta'ala. And we're only acting as a facilitator to helping individuals to clear up from their problems. But we don't take, case-sensitive disorders. That's all. ठीक है. और अगर हम इसके बारे में, आपकी वेबसाइट भी है गालिबन, आपका एक पेज भी है जिसपे अरसलान लारिक एंड को के नाम से गालिबन. They can go onto the website. It's under construction. What basically, आपने जो एक सवाल पूछा था, we're trying to incorporate that. हम लोग अपने graduates जो कि we feel are at the par, level, but they have done significant amount of research and work.
we're going to upload their profiles on our website. So all our graduates that have graduated from us, and we're very sure about their performance, we're basically going to highlight them on our website. So you can always contact them. तो वहां पे लेकिन ये याद रखिएगा कि इसकी वेरिफिकेशन का जो मॉडल है वो इन सेल्फ है. देयर इज, मैं ये बताता चलूं लोगों को कि कल को लोग बोलेंगे जी लारिक ने मरवा दिया हमें, तो आपके एनएलपी वाले बंदे ने मेरे बच्चियों के राज खोल दिए, मेरी तस्वीरें भेज दी, मेरी बीवी का अफेयर बता दिया, व्हाटएवर, मेरी जॉब का मसला था और मैं आगे बिजनेस में इस तरह बढ़ना चाह रहा था, मेरे सीक्रेट्स लीक कर दिए. ये आपकी जिम्मेदारी है. अगेन जो लोग सुन रहे हैं ये ध्यान रखें, जज्बाती होने की जरूरत. Even Irfan, to be very honest, even when you're going to a psychologist for a very serious concern or problem, or even to a psychiatrist, again, it's your own responsibility. Exactly. Make sure you're going to authentic individuals, right? Make sure you're going to people who you have heard about, you have been referred about, or you know their credibility in the industry. मुझे क्यों मिली है कि हमें 5 मिनट और मिल गए, क्योंकि लोगों का फ्लो बहुत ज्यादा सवालात का, मेरे पास अभी क्यों आई हुई थी, मैं इतना खोया हुआ था सवालात पढ़ने में कि मैं खुद भूल गया क्यों मेरे पास 1.5 मिनट से आई हुई है कि आप इसको आगे कर लें. वी हैव 4 more minutes, 1 मिनट में हम क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे. तो लारिक, अगर मैं इस पर आगे पूछना चाहूँ, आपने मुझे बताया सारी चीजों के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बताया. अब जनाब एक इंसान है, मैं जानना चाहता हूँ ना, इनटेक प्रोसेस में बात करते हैं. मैं जनाब जेल गया फॉर अ सेक्स प्रेडेटर, ठीक है ना जी. मैं जेल गया, मैं आता हूँ, मैंने कहा लारिक साहब मुझे एनएलपी करा दे, उसके साथ मैं मास्टर प्रैक्टिशनर भी बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर, क्योंकि एक होती है एथिक्स कमेटी. आप जब इस तरह की फील्ड में जाते हैं ना, तो एथिक्स कमेटी होती है जो आपको बाईपास करती है कि यू आर फिट फॉर दिस और नॉट. अगर वो एथिक्स कमेटी ना हो, यानी कि ये लॉयर की फील्ड में भी है, डॉक्टर की फील्ड में भी है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी, हर फील्ड में एथिक्स कमेटी होती है. आपकी क्या एथिक्स कमेटी है जो ये देखेगी कि जनाब इरफान तैयब इज मेंटली फिट and the right person to go through it for the intake process? Yeah, for the so what happens is that I'll give you an example. There was a graduate basically who we took, and we got him to complete the NLP practitioner process, and in between we realized that that's not the right frame of individual that we would want to have in our practitioner. So we revoked the license immediately. But for us also to make all those assessments about an individual, because we go with a blank piece of paper, we don't have any prejudgments about somebody. आपने अभी बोला कि कोई एक बंदा है जो कि अपनी सजा काट के आया, तो अगर वो सजा काट के आ गया, तो he's paid his part that he was basically blamed for. And if somebody wants to basically create that change and shift in themselves, and वो वाकई अपने आप को बदलना चाहते हैं with that intention, then we evaluate them. That's the 6 days that we want to evaluate them. Are they really worthy of it? And if they have, bare minimum qualification, if they have met, we certify them. But again, we basically... इसी से एक टॉप अप क्वेश्चन करते हैं. आपने अभी तक कितने लोगों को पढ़ाया जो आपके कोचेस निकले? Me individually. Me in Pakistan, about 300 individuals. 300 कितने थे और कितने रिजेक्टेड है? In the entire 300 lot, there was only 2 backoffs. So we had 2 individuals who actually backed off, and we had about... चले गए, खुद चले गए. Yeah, they just basically left on their own. So we gave them 100% refund. देखे ना, मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, एडमिशन लेने जाता हूँ, मैं भाई एक क्राइटेरिया है, मैं येल का कोर्स करना चाहता हूँ, ठीक है ना जी. मैंने येल की वेबसाइट पे किया, देयर इज अ प्रीरेक्विजिट दैट आई हैड टू डू. बात ये नहीं है, मुझको, मैं लोगों के लिए क्लियर ये करना चाह रहा हूँ, हर पैसा रखने वाला आदमी जाके नहीं कर सकता. इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है भाई? मेरे पास 2 लाख रुपए, मैंने कहा जी मैं आगे चल, लारिक आजा पार्टी करा दे, सानू भी बच्चियां ही बटा लेंगे यार. तो मैं ये कहना क्या ये हाउ डज इट वर्क? क्या हम, अगर यूनिवर्सिटी में एक बच्चा A ग्रेड आता है, B ग्रेड आता है, C ग्रेड आता है, फेल भी होता है, तो आपकी क्लास में इनटेक प्रोसेस में क्या ऐसा है कि जिससे आप ये वेरीफाई करते हैं? Like I said, for our intake process, we can't really verify a client before we intake them. So we do intake them based on, the few criteria that I said. They have a thirst for learning. Number one, they want to learn. They want to basically invest on their personal development, and they have a fair understanding of English language, and they want to create change and shift for themselves. We will intake any client. So we have always intook, individuals who basically met these criteria. And during the process, what we basically evaluate them on is the 14 NLP presuppositions. That's exactly what I basically focus on. And I want to see if they're at cause or at their effect. ये तो फिर वो हो गया one size fits all. कैसे हो सकता है डाकू डकैत, आप उसको कैसे जज करके कहेंगे कि भाई तू साइड हो जा, तू सही आ जा? आम जब चिप्स भी बनते हैं ना, लेस के पोटैटो चिप्स बनते हैं, तो वो बताते हैं हमने एक बहुत बड़े पोटैटो की तादाद को फेंकते हैं. हालांकि हमारे मुल्क में तो घर सब इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्वालिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए.
और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोसेस को सुनने के बाद मुझे क्राइटेरिया में ऐसा कुछ नहीं लगा सिवाय इसके कि जी 2 लाख रुपए पड़े हो, आगे से मैं जी हाँ हूं करता रहूं, क्योंकि बैकग्राउंड चेक तो आप कर नहीं सकते, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। आप क्या, मैं भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में बैकग्राउंड चेक, एम आई राइट? Like I said, for the 6 days that you're going to be with us, we're going to basically assess you. At a personal level, if you really ask me, Irfan, I feel that every human being is capable of basically changing and should be given a chance. Do you understand, Irfan? At a unified level, हम सब लोग गलतियां करते हैं. I have done blunders in my life that I basically might also have. But if they have the intention to change, again, I said we want to only see the intention of change. Are they able to respect other person's model of the world? Are they able to be flexible? मैं समझ गया, आपने सही कहा चेंज। मैं जब भी खुद भी मुस्कुराया, क्योंकि चेंज होने का सेकंड चांस मुझे भी मिला जिंदगी में कई दफा, मैं शुक्रगुजार हूँ। बच्चा अगर आपकी क्लास में जिसको आपने फारिग किया और आपने कहा इवैल्यूएशन में नहीं समझ आया, आपने उसके पैसे वापस किए? When they basically disqualify and they're not able to meet the criteria, we have 100% sent a refund. So if they don't basically go through the process and they've not been able to understand the process and they feel this is not for them. So for example, somebody even comes and say कि ये 6 दिन मैंने attend किया Arsalan, but ये मेरे लिए नहीं था. It did not help us. So आप पूरे 6 दिन के बाद नहीं, on the day 3 you should have realized that, and if you have realized that on day 3, we will give you the full refund. अगर ना बोले अच्छा नहीं लगा। I'll tell you also, there was a person who made a YouTube video and he said, I have spent $50,000 only on NLP and it was useless. So my first question to him was, why did you end up paying 50,000? Why didn't you realize that on $10,000? You know? अच्छा, एक बात बता आखिरी, जो यार मैं बता रहा हूँ ना, सवाल बहुत है, बस सिर्फ इस पे मैं खत्म करना चाहूँगा। और ये कि क्या कोई अगर इंसान जरूरतमंद हो तो फ्री में कर सकता है? क्या आप उसकी हेल्प करेंगे या आपके प्रैक्टिशनर्स उनकी हेल्प करेंगे? क्या आप ये कमिशन देते हैं? हमारे ऑक्सब्रिज पे ये कहते हैं, आप देंगे किसी की हेल्प? Yes, and like for example, what we would do is we want to basically give them an engaged assignment, and if they do complete that assignment, we would. नहीं आती लारिक साहब? Sorry, अंग्रेजी नहीं आती बंदे नु? Oh, don't worry. For that, so I have a person who basically can speak in Pashto. We have a person who can speak in Sindhi. We have a person who can speak in Baloch. We have a whole team that is there to support. I would not personally be able to do it because I only specifically take on clients. So that's a logical restriction on my end. So I only take people who can speak in English. So, but my team is as capable as me. They have been trained under me, and they are fully authorized to do it. And to be honest, we've been taking clients like that always. Significant. Our major. Arsalan Larik and Co में Arsalan Larik जो है वो पिक्चर से हटा दिए जाते हैं, अल्लाह ना करे। Yeah, so our company that we formed was Arsalan Larik and Co, and we have completely rebranded. Now, if you see our rebranding, it's AL and Co, and we try not to mention Arsalan Larik. Do you understand? So, what I basically believe is that I want to basically have my retirement, and I've already have my people who are ready. By the way, in Pakistan there was only me, and there was one more gentleman who was a trainer of NLP. If you go on the NLP trainer website, we have produced 2 more trainers in my own competition for myself. But because there is no competition, I have personally created 2 trainers, who are serving in Pakistan, and they're doing a remarkable job. They're there in the field. There's so much of us, required that we can do so much. And I encourage every student of mine to become a trainer so that I can basically also. चूंकि बहुत आगे जा चुके हैं टाइम में, और मैं टाइम की बिल्कुल पहले ही मैंने बड़ी धज्जियां उड़ा दी आज तो टाइमलाइंस की। मैं आपसे ये कहता हूँ, पहली बात तो जो यहाँ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे यार, बड़ा मजा आया है, बट बहुत सारी चीजें रह गई हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन टैप दोस नीड्स एज वेल। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि व्हाट इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैविंग कमिंग हियर एंड हमारी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, माशाल्लाह आपकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कहना चाहेंगे अपने? Yeah, I would say that there's only one belief system that I've believed in, and I've believed in basically investing on myself. So I have never been ashamed of that. So I would really recommend that if any one of you, instead of investing on properties, luxuries and areas of life, which are also necessary and you should do if you want to, invest on yourself. Why? NLP is because upload. It's like a mind gym. Again, it's just exercising your mind. It's exercising your neurology in a very different perspective. I say at least visit this gym also once in a while. Stay blessed. I love you all. I've always been humbled by what I basically do, and I'm honored. My clients have taught me who I have become today. I've learned from my clients. I haven't learned more from learning what
NLP is. My clients have taught me how to be a better human being. लारिक मेरी तारीफ नहीं करेगा. Just messing with you, brother. Just messing. Irfan, yeah. You're somebody that ran away to US. I got to bring you back to Pakistan. यार ऐसा ना बोलो. Thank you so much for opening this platform up and yeah. चले जनाब, थैंक यू सो मच. मैं इतना कहना चाहूंगा इन दी एंड जनाब, एनएलपी एक जबरदस्त टॉपिक है और इसके ऊपर 1 घंटा शायद या 1.5 घंटा जो हम लगा चुके हैं. एज अदनान का भी शायद कमेंट आया हुआ है कि बड़ी अच्छी एफर्ट है. हम ये छोटी सी काविश थी कि हम बात करें कि जी मैजिक, मिथ, मिसकंसेप्शन. होपफुली हमने इनसे रिलेटेड सारे सवालात के जवाब देने की भी कोशिश की, करने की भी कोशिश की और आई एम वेरी सर्टेन आपने एंजॉय किया होगा. और इसी नोट पे मैं इतना कहना चाहूंगा जनाब, अपना ख्याल रखें. और लारिक का जो नोट है मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जरूर ना भूलें. मेरी भी हमेशा यही साइंस होती है और मैं भी इस फंडे पे बहुत बिलीव रखता हूँ कि आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करें और यहाँ से लेकर के नजर आने से लेकर के हर चीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान दें. इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम. Satisfying Saturday signing off. Pleasure.